बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो जॉब्स मैं शेयर करूँगी वो वाली जॉब्स आई थी डॉन संडे 26 मई 2024 के अखबार में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़। A leading organization requires the services of qualified, energetic, medically fit and self-motivated staff for the following position. Serial number 1 position name business analyst, location Karachi. Qualification and experience. Qualification minimum CA/ACMA or MBA/ACCA. Experience 1 at least 4 to 6 years of experience. Number 2 candidates with a background in strategic and financial risk assessment and planning will be given preference. Number 3 extensive knowledge in sales and marketing with a strong willingness to coordinate effectively with the sales department. दूसरी पोजीशन है मैनेजर रिस्क एंड कंप्लाइंस, कराची की जॉब है ये भी। क्वालिफ़िकेशन ACCA, CA और MBA एक्सपीरियंस। नंबर 1 मिनिमम of 4 to 6 years of experience in risk management and compliance with at least 2 years in a managerial role. Number 2 in-depth knowledge of risk assessment and mitigation strategies, regulatory compliance requirements. नंबर 3 मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग, कराची की पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन ACCA, CA और MBA एक्सपीरियंस। नंबर 1 मिनिमम ऑफ 4 to 6 years of experience in financial planning and analysis with at least 2 years in a managerial role. Number 2 strong knowledge of financial planning, budgeting and forecasting techniques. Number 3 proficiency in financial modeling and analysis software and tools. 4 QHSE एग्जीक्यूटिव, कराची की पोस्ट है। ये भी क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स और DAE एक्सपीरियंस। नंबर 1 एट लीस्ट 3 years in oil and gas sector. Number 2 have recognized HSE trainings, not EA/DA will be given. Apply in confidence within 10 days of publication of the advertisement. Publication date है 26 May 2024. Apply online with your updated resume along with the covering letter at careers.oilgas@outlook.com. अच्छा जी, एक और जॉब है। Are you willing to lead a winning team? PCI Group is in search of talented, dynamic and self-motivated professionals. If you want to enrich your career by working for a company committed to excellence, then we have the following opportunities waiting for you. Manager/deputy manager, injection molding/extrusion blow molding, BE polymer engineering, knowledge of production management/Japanese management system. Minimum 7 years of experience in manufacturing industry. Manager/senior executive/executive product development. BE/MBA industrial/mechanical/electrical, knowledge of AutoCAD, mold designing, good command on written and verbal communication. Minimum 3 to 7 years of experience in manufacturing industry. Senior executive/executive human resource, BBA human resource, knowledge of HR operations. Minimum 2 to 3 years of experience in manufacturing industry. Manager/deputy manager/assistant manager-sales, MBA-marketing, knowledge of sales and marketing strategies for customer base expansion. Minimum 7 years of experience in furniture industry. Finance manager, ACCA/ACMA, qualified knowledge of financial reporting, budgeting, taxation. Minimum 7 years of experience in manufacturing industry. Assistant manager, SAP, ABAP, BE computer science, knowledge of SAP S/4HANA. Minimum 5 years of experience in manufacturing industry. Graphic designer, graduate, knowledge of Photoshop. Minimum 2 years of experience in furniture industry. Assistant to Chief Marketing Officer, MBA marketing. Minimum of 2 years of experience in manufacturing experience.
Company offers competitive salary package along with professional growth opportunities. Interested applicants must post their resume within 10 days of this advertisement. 26th May 2024 is the publication date. 401 Day Drake Rafai Arm Society, Malir Halt, Karachi 75210, or email your resume at pcigroup@gmail.com. pcigroup@gmail.com. Kindly mention position applied for in subject line of your email. अच्छा जी, ये PPL की जॉब है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड. पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL इज़ मेंटेनिंग अ सेंचुरी ओल्ड लीगेसी करियर अपॉर्चुनिटीज़. ये भी अच्छा है. इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 जून 2024. ठीक है जी. 26 मई की अखबार में आई थी ये. पहली जॉब बता देती हूँ. मैनेजर रिजर्वियर मॉडलिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 14 years ऑफ experience in upstream E&P industry with subsurface teams in carrying out reservoir simulation studies with a lead role in field appraisal and development projects. Job responsibility: this position will report to head of development and be responsible to carry out and manage in-house reservoir simulation studies and quality control of third party. ये आप लोग इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का. ठीक है जी. अच्छा जी, दूसरी पोस्ट है सीनियर बिजनेस एनालिस्ट फाइनेंस. क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस: क्वालिफाइड एड ACCA/CFAP/MBA with at least 8 years of relevant work experience और BBA/BS ब्रैकेट में लिखा हुआ इकोनॉमिक्स फाइनेंस और अकाउंटिंग ब्रैकेट क्लोज विद एट लीस्ट 10 years ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस. कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस विद ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री स्पेशली in budgeting and planning would be preferred. Job responsibilities: this position is responsible for conducting financial एनालिसिस प्रोवाइडिंग इंसाइट्स ऑन. ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अच्छा, तीसरी जो पोस्ट है वो है सीनियर बिजनेस एक्सीलेंस ऑफिसर. क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस: बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, engineering environmental sciences or related field with at least 7 years of experience in business process improvement, sustainability or related fields, preferably 3 years in a team lead role. Candidates having experience in oil and gas industry would be preferred. Job responsibilities आप लोग देख लीजिएगा. जॉब होल्डर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट बिजनेस एक्सेलेंस फ्रेमवर्क. ठीक है जी. अच्छा जी, एक और पोस्ट है बिजनेस एक्सीलेंस ऑफिसर. क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस: बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंसेस और रिलेटेड फील्ड विद एट लीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लीन मैनेजमेंट विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन environment, including demonstrated ability to work on sustainability and social responsibility aspects, preferably in oil and gas sector. Job responsibility: the job holder will develop and implement lean management strategies for environmental sustainability and operational excellence. This includes leading team projects, collaborating with teams to identify. ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है. अच्छा जी, एक और पोस्ट है बिजनेस डेवलपमेंट / सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर. क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस: 4 year बैचलर्स डिग्री विद मेजर इन फाइनेंस / इकोनॉमिक्स / बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन / अकाउंटिंग एंड मिनिमम ऑफ 4 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, preferably in the energy sector. Job responsibility: this position is responsible for conducting market research to identify trends in the energy sector in both local and international industry and identifying emerging
मार्केट सेगमेंट्स, ये आप लोग इसका जो है ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। सीनियर इंजीनियर कोरोजन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन मेटलर्जी, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग विद minimum 10 years of working experience in Pakistan with a preference to relevant international exposure. Job responsibility, the position shall be responsible for corrosion engineering related technical matters। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है जी। एक और पोस्ट है इंजीनियर स्लैश सीनियर इंजीनियर वेल इंटीग्रिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन पेट्रोलियम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 6 to 8 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान विद अ प्रेफरेंस टू रेलेवेंट इंटरनेशनल एक्सपोजर। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द पोजीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू वेल इंटीग्रिटी एंड provide support to drilling well designed production projects and inspection teams। Technician rotary, qualification and experience diploma of associate engineering in mechanical technology with at least 10 years of experience in oil and gas sector or fertilizer industry। Candidates having experience of executing major overhauls of high speed turbo machinery would be preferred। Job responsibilities, the job holder is responsible for performing major overhaul jobs, troubleshooting। ठीक है जी, आप लोग ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट है। मेडिकल ऑफिसर स्लैश सीनियर मेडिकल ऑफिसर, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस FCPS ब्रैकेट में लिखा हुआ इंटरनल मेडिसिन, FCPS फैमिली मेडिसिन, MRCP ब्रैकेट में लिखा हुआ UK/IRE DABIM एंड DABFM और those who have completed 4-year residency in internal/family medicine in a structured training program as per CPSP guidelines। Candidates must have 1 year of post fellowship/post residency experience, preferably in corporate sector। Registration with PMDC is mandatory। Job responsibility, the position will be responsible for both clinical and administrative roles including running clinics at various PPL sites, visiting hospitals for inpatient staff। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये लास्ट है स्टाफ नर्स वुमेन ओनली SUI फील्ड हॉस्पिटल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस BSc ब्रैकेट में लिखा हुआ नर्सिंग/डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विथ midwifery and 2 to 3 years of relevant experience। Candidates having experience in OT and pediatrics would be preferred। Job responsibility, this position is responsible for delivering high quality patient care, working/collaboratively with company doctors and providing support to patients। The job holder will also be responsible for assessing patient needs, administering medications and monitoring patient progress, as well as maintaining accurate records। General women meeting the required qualification and experience are required. Women meeting the required qualification and experience are encouraged to apply। Since these are regular positions, candidates will be screened for continuity and retirement age। The cut-off date for calculating required experience will be the last date of application submission। Interested candidates may visit our website for details and apply online at https://www.ppl.com.pk/human-resource/vacancies, latest by June 10, 2024। Only shortlisted candidates will be called for interviews। Disclaimer: in case suitable candidates are not available, the positions will remain vacant। तो जी, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।